Hello and good morning to all of you. I am Megha Dayani, your science teacher, and today we are we have reached in the second session of chapter number 1, nutrition in plants. Before starting, join your hands, close your eyes and chant the mantra. Okay, come back everyone. In the first session, we have learned that we need energy, we need nutrition for that, so that we can do different kinds of work and it is even needed for the growth of our body, to repair the damaged cells in our body. For all those things we need nutrition. Basically there were two types of nutrition, two modes of nutrition: autotrophic and heterotrophic. In the first session we have learned about autotrophic mode of nutrition. In that we have learned about the photosynthesis process. Photosynthesis process was done in the plants which are green in color, mostly the plants which are green in color. That was the first we have learned, first topic. And the second topic that we learned was synthesis of plant food other than carbohydrates. Carbohydrates was synthesized using photosynthesis process. Yes, and the next that we learned was about how nitrogen was present in the plants and how can it be synthesized into proteins and fats. That was all we have learned in the first session. Today in the second session we are going to learn about heterotrophic mode of nutrition. Plants which cannot produce their own food, and so these are dependent on green plants or other organisms for their food, are called heterotrophs, and that mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. What basically happens? These are the plants which cannot produce their food because maybe possible those are not green in color, or maybe less amount of chlorophyll in them. See, there are some plants which do not have chlorophyll, so they cannot synthesize their food. Now, how do they survive and from where do they derive nutrition? From where will they derive it? Like humans and animals, such plants depend on the food that is produced by the plants. These are called heterotrophic mode of nutrition. Clear this much? Humans और animals के जैसे ही जो प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे खुद को सरवाइव रखने के लिए, खुद को फीड करने के लिए। वो अपना खाना, अपना फूड जो दूसरे प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है उसको यूज़ करेंगे. सो दे यूज़ विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? दे यूज़ heterotrophic mode of nutrition. Now see, you might have seen some yellow tabular structures which are twining around the stem and the branches of a tree, as you can see here. You can see one plant is there on which एक ट्वाइनिंग लगा हुआ है, पूरा 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 ऐसे राउंड राउंड घूम के स्टेम पूरा जो है ना वो ब्रांचेस और स्टेम्स पे ऐसे जा रहा है. उसको क्या बोलते हैं? अमर बेल या तो कसकट. वो पूरे प्लांट पे ऐसे घूम जाएगा. ठीक है. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देर आर पर्टिकुलर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस. ओके, सो फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज पैरासिटिक. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? उसमें एक प्लांट होता है जिसमें कोई दूसरा प्लांट उसके ऊपर रहता है. ठीक है. तो जिसके ऊपर वो प्लांट रहता है ना उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं, और जो प्लांट उस पर रह रहा है उसको पैरासाइट बोलेंगे. सो हियर द अमरबेल दैट इज कसकटा इज पैरासाइट एंड द अदर प्लांट इज कॉल्ड अ होस्ट प्लांट. अभी पैरासाइट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जिस प्लांट पे रह रहा है, मतलब कि जो होस्ट प्लांट है, it will take all the nutrition of the plant of the host plant. Okay, so we can say that it is damaging the host plant. वो पूरा उसको मार नहीं देता, पर हाँ ऑब्वियसली वो जो खाना बनाता है उसमें वो थोड़ा थोड़ा खाना अपनी तरफ लेते जाता है. ठीक है. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट प्लांट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट. इसको पैरासाइट क्यों बुलाया जाता है वो समझ में आ गया सबको? ठीक है. नाउ ये जो कसकटा प्लांट है, इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, सो दैट इज वाई इट टेक्स द रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट. Clear this much everyone? Very good.
नाउ इसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट, बट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा यूज किया, तो उसको क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. क्लियर दिस मच एवरीवन? वेरी गुड. नाउ वन क्वेश्चन आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू. Do animals and we human beings are also parasites? Or we follow the parasitic nutrition? Just think on it. No or yes? What is your answer? See, we are not parasites because we don't kill the plant or we don't live on it. Yes, हम प्लांट्स में से न्यूट्रिशन ज़रूर लेते हैं, पर पैरासाइट किसको बोला जाता है, जो उस प्लांट पे रहता हो, उसके ऊपर या तो उसके अंदर. वी डोंट डू दैट, सो वी आर नॉट पैरासाइट. बट या इन सम और द अदर वे ऑब्वियसली वी फॉलो द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ओके, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ पैरासाइट एंड फॉलोइंग द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सी, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर वेयर दिस अमर बेल दैट इज कस्कट प्लांट इज येलो कलर में है, and the rest is the host plant. Okay, the another examples of the plants which follow the parasitic mode of nutrition are corpse flower and rafflesia. I guess now parasitic mode of nutrition kya hai, that is clear to all of you. Okay, next that we are going to start is saprophytic mode of nutrition. Okay, you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on the rotting wood during the rainy season. Now, what kind of nutrient they need to survive and from where do they get them? Okay. So, these all things we are going to learn in this saprophytic mode of nutrition. And the plants which would be following saprophytic mode of nutrition, those are called saprotrophs. Basically, they obtain the nutrients from the dead and the decaying organic substances. But how? Before understanding that, let us take one example. See, take a piece of a bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for almost 2 to 3 days or until the fluffy patches appear on them. These patches may be white, green, brown, or of any other color. Now try to observe these patches using a microscope. Microscope सबके घर पे तो होगा नहीं, so you can use magnifying lens also. Okay, most probably you will see the cotton like threads which are spreaded on the piece of the bread. यहाँ zoom करके दिखाया हुआ है, देखा. Now these organisms are called fungi. What are these organisms called? These are called fungi. Now they have different mode of nutrition. What they will do, they will secrete the digestive juices on the dead and the decaying matter and convert it into a solution. You can see here, see, dead plants are there. Now see, these dead plants will have developed fungus on them and they will start secreting the digestive juices and convert it into the solution form. Now what these mushrooms will do, here we are taking one example of mushrooms, so let us concentrate on that only. Other plants will be following the same method. Okay, now they absorb the nutrients from it. This mode of nutrition in which the organism take in nutrients in the solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, and the plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Clear? इन शॉर्ट, डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है वहाँ पे फंगस आता है, वो लोग क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस सीक्रीट करेंगे, उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, तो बाकी के प्लांट्स उसमें से अभी सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उनको न्यूट्रिशन मिल गया. सो दोज प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर? ओके, नाउ सी, fungi can also grow on pickles, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. Even during the rainy season, they spoil many things. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Germinate होना मतलब वो बड़े होते जाते हैं,
उसमें से फिर वो जर्मिनेट होंगे, मतलब पैदा होंगे, फिर बड़े होते जाएंगे। तो ये सारे स्पोर्स कहाँ से आएंगे? हवा में ऑलरेडी होते हैं ये फंगल स्पोर्स। फिर जैसे ही उनको जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो वैसा एटमॉस्फेयर मिल गया। कैसा एटमॉस्फेयर? पूरा वेट है, मतलब वार्म है, ह्यूमिड है, तो वहाँ पे वो जर्मिनेट होते जाएंगे और फिर ग्रो होते जाएंगे। अपनी मम्मी को एक बार पूछना कि ये फंगस जो है ना वो घर पे किचन में कितना बाप रे मेनेंस पूरा क्रिएट करता है, पिकल्स और वो सब कितना संभालना पड़ता है, वरना उस पर पूरा फंगस लग जाता है, वाइट कलर का लग जाता है ना फंगस, आपने भी देखा होगा शायद। सो टुडे वी हैव लर्न 2 modes of nutrition, parasitic and saprophytic. Okay, in the next session we will learn about the other 2 modes of nutrition, and even we will learn about how nutrients are replenished in the soil, but that is for the next session. For today this much is enough. Thank you so much. Stay happy, stay well, be healthy, eat well. Thank you so much.